Afreen Qureshi earns a living by stitching small things at home. She could not complete her own education, but now helps her two daughters complete their studies. Afreen is the sole breadwinner of the family, and the 2,000 rupees her two daughters would get annually as scholarship from the central government was a huge respite for the family. But this assistance has now been stopped for the beneficiaries. स्कॉलरशिप जो मिलती थी वो हम लोग को बहुत सहूलत थी स्कॉलरशिप की। एक टाइम हम लोग को स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे हम लोग ड्रेस लेते थे बच्चों का 1 साल। वो ड्रेस हम लोग रिपीट 3 साल चलाते। फिर एक बच्ची को मिलती है, 2 बेटियां हैं मेरी, तो उसमें से एक दूसरी को मिलती तो हम लोग उससे कॉपी किताब खरीदते। हम लोग को बहुत सहूलत थी स्कॉलरशिप की। जैसे कभी ड्रेस आ गया, कभी कॉपी किताब आ गई, कभी सैंडल है, जूते हैं, स्कूल के बहुत से खर्चे रहते थे, वो उन ज़रूरतों से पूरे हो जाते थे स्कॉलरशिप से। नहीं आएगा तो बहुत नुकसान होगा, हम लोग को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, कुछ भी काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे हम लोग की ज़रूरतें पूरी हो जाए तो हम लोग के बच्चे पढ़ पाएंगे आगे। Afreen's is not the only case. Kehkashan Khan, who lives in the same area, runs a house by doing embroidery work throughout the day. She lives with her two daughters in a rented house and barely earns 7,000 to 8,000 rupees a month. This is a tiny amount, and the annual scholarships helped her meet the needs of a school-going daughter. 1,000 रुपए में कैसा बच्चे लोग का जो स्कूल में यूनिफॉर्म्स और कॉपी किताब जो आती थी ना, पहले बच्चे लोग थे, इन लोग का स्कॉलरशिप का जो कुछ भी मतलब पैसा इन लोग को मिलता था। अभी कैसा ना, वो जो पैसे में मतलब अभी मैं कोई काम में मैं डबल मेहनत हो गई है, जिससे मुझे खाना आना पकाने का रहता है। समझो अभी दिन भर का पका लिए तो बच्चे लोग के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्या बच्चों को कहीं लेके जाना आना, लेकिन अभी वो सब कुछ नहीं होता। अब मैं सोचती हूँ वही 2 पैसे के लिए मेरे, और मैं अगर ये काम कर दूंगी 1-2 घंटा और, तो मेरे वो पैसे मेरे बच्चों को काम आएंगे। Recently, a protest against the central government was held at the Azad Maidan in Mumbai against the removal of the student scholarship. The centre began scholarships for minority students from 2006. The scholarships had started on the recommendation of the Sachar Committee report. The scholarships were given to students with annual family incomes of less than 1 lakh rupees. In the last 8 years, 5.2 crore pre-matric scholarships have been given. Over 6,700 MPhil PhD students have benefited since 2014. The central government claims the scholarships have been stopped because education till class 8 in government schools is free under the right to education. But there are scholars like Dr. Bhalchandra Mungekar, a former planning commission member, who believe that scholarships have been stopped to target a particular minority community. I accuse the government, in fact they are targeting the Muslim community, because if we see the statistics of the beneficiaries from years together, we find, for example, recently the statistics was quoted in the parliament from 2014-15 to 2021-22. Out of the total scholarships, 3.63 crore scholarships were given for the Muslims. But girls seem to be at the risk of losing out the most. कि लड़कों को तो कैसे वैसे माँ बाप बोलेंगे नहीं पढ़ाना है, लेकिन लड़कियों को बोलेंगे अगर लड़की है तो बोलेंगे जाने दो, उनको आगे क्या करना है, उसको पढ़ा नहीं, उनको पता है, उनको पहले से पता होता है कि हम ज्यादा आगे पढ़ा नहीं पाएंगे, वैसे 10वीं तक ही हम पढ़ा लेंगे क्योंकि स्कूल हमारे एरिया में है, तो यहाँ पे नजदीक होने के से बच्चे 10वीं तो कर लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा, इसके वजह से 10वीं भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको मतलब उनके पास है ही नहीं कुछ, बच्चे पेरेंट्स एकदम बेसहारा, उनके पास है ही नहीं, इनकम का कोई जरिया ही नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि फिर बच्चों में देखा जाए तो लड़कियों को ही बिठा देते हैं। When asked about the closure of the scholarship in the current budget session, Minority Minister Smriti Irani said in a written reply that due to free education from class 1 to 8 under the right to education, only class 9 and 10 students are now being given a scholarship. As the Maulana Azad National Fellowship scheme overlaps with various fellowship schemes for higher education, the government has decided to discontinue the MANF scheme from 22-23. The closure of these scholarships have affected mostly those families where these children are the first generation to ever get formal education. However, now there is a question regarding their future. The scholarship is supposed to bring those who are deprived into the mainstream, but now it seems like the most deprived students are getting away from it. In Mumbai, with camera person Rajendra Dayalkar and Praveen Jirohit, Sohit Mishra, NDTV.